छोटा फैक्टोरियल वैल्यू हो तो उसको हम प्राइम फैक्टराइज करके हाईएस्ट पावर अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं इंटीजर्स ग्रेटेस्ट पावर, इसको आईजीपी भी बोला जाता है, राइट, आईजीपी इंटीजर्स ग्रेटेस्ट पावर, ठीक। बट लेट्स से यार कि अगर एक बहुत बड़ा नंबर आ जाए, देन व्हाट विल यू डू? तो देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, बट दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल टू प्राइम नंबर्स, राइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट करने के लिए है दैट द फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल टू प्राइम नंबर्स, राइट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव? सो लेट्स से आपको n फैक्टोरियल में a की हाईएस्ट पावर निकालनी है, राइट। यू हैव टू कैलकुलेट द हाईएस्ट पावर ऑफ a in n factorial. Let's say this is the question, right? The process is n divided by a plus n divided by a square plus n divided by a cube and so on. So this you will continue. But the question is कब तक कंटिन्यू करेंगे यार, ठीक है। सो कब तक कंटिन्यू करेंगे इज व्हेन यहां पे n is less than a to the power let's say x. a की जिस भी पावर पे n की वैल्यू उससे कम हो जाएगी, that is the point where we are going to stop, right? And इसमें से जो वैल्यू हम बाहर लेने वाले हैं, the value that is going to come out is only going to be the integral value. We are only going to take out the integral value, right? This we are only going to take out the integral value. एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, राइट। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कीप द फॉर्मूला इंटैक्ट ओवर देयर, ठीक है, सो दैट यू डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। तो मेरे पास क्या है बॉस? लेट्स से मेरे को बोलता है कि 72 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर निकालिए। 2 की हाईएस्ट पावर इन 72 फैक्टोरियल इज द क्वेश्चन। प्रोसेस मैंने क्या बताया? 72 डिवाइडेड बाय 2, 72 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज a स्क्वायर, 72 divided by a cube, 72 divided by a to the power 4, 72 divided by a to the power 5, 72 divided by a to the power 6. That is where I will stop. Why? Because इसके बाद it will be 128 and मैंने क्या बताया कि जैसे ही मेरा n का वैल्यू a की सम पावर से कम हो जाएगा, I will stop. So this is where I will stop, right? अब मैंने एक और बात क्या बोली? We'll only take the integral value for us. We'll only be taking out the integral values. So what do we have? 72 by 2 36, 72 by 4 is 18, 72 by 8 is 9, 72 by 16 is 4 point something, but we'll only be taking the integral part, so we'll only be taking 4. 72 by 32 is 2 point something, but we'll only consider the integral part. 72 by 64 is 1 point something, we'll only consider the integral part. And that is why we stop over here, because 72 by 128 would be 0 point something and we'll be adding on zeros only, right? So that would be of no use to me. So this is how you will be calculating. Now let's sum them up. When you sum them up, what do you get? 36 plus 18, 54. 54, 9, 63. 63 and 4, 67. 67 plus 3, 70. So the highest power of 2 in 72 factorial is turning out to be what? Is turning out to be 70. राइट, एक और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट फॉर द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 एज वेल। इन 72 फैक्टोरियल में ही करते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ 3, राइट, हाईएस्ट पावर ऑफ 3। सो व्हेन यू हैव अ 3, व्हाट डू यू हैव? 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3. That's all you have, because 3 power 4 is 81, that will cross the value. So what do you get? 72 divided by 3 is what? It is 24. 72 by 9 is what? It is 8. 72 by 27 is what? It is 2 point something. We'll only consider the 2 part. So what is the highest power of 3 available in 72 factorial? It is 24 plus 8 plus 2, that is 32 plus 2, 34. So the highest power of 3 available is 34. Correct? One more thing you need to understand. Right? There is one more thing you need to understand. अब हर बार you do not need to write this. अब एक सिंपल से एक प्रोसेस समझो। आपको क्या करना होता है ना, लेट्स से अगर मैं आपको 2 के लिए ही कैलकुलेट करके दिखाता हूं, लेट्स से मैं आपको 2 के लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूं, एक शॉर्टकट बताता हूं जिससे आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You won't have to write this much, right? If you do by this.
बट यू हैव टू बी गुड एट कैलकुलेशन। आपने पहली वैल्यू ले ली 72/2, आपकी वैल्यू आ गई 36। इतना सब कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल करो। 36/2 18, 18/2 9, 9/2 4.5, 4/2 2, 2/1 2/2 1, काम खत्म। सिमिलरली आपको 3 के लिए कैलकुलेट करना है। 72/3 24, 24/3, ये नहीं कि हर बार 2 से करते जा रहे हैं। 24/3 8, 8/3 2 point something, 2/3 0 point something, काम खत्म। सो द फर्स्ट वैल्यू यू नीड टू कैलकुलेट, उसके बाद जितनी वैल्यूज आती है सबको जिस भी प्राइम फैक्टर के लिए निकाल रहे हो उससे डिवाइड करते चले जाओ। 5 के लिए भी चेक करके देख लेते हैं कि अगर 5 के लिए होता तो 72/5 इज व्हाट? इट इज 14, 14/70, 14/5 इज व्हाट? 2 point something 2, काम खत्म। इसके बाद कुछ नहीं बचा मेरे पास, और यू आर लेफ्ट विद इज 16, correct? So this is how you calculate the highest power, the greatest power of an integer, but that integer in our case necessarily has to be a prime number if you want to calculate via this. So I hope now everyone is clear कि किसी भी prime number की highest power in any factorial, how will you be calculating? I hope that part is clear to everyone. In the next video we'll be covering कि composite numbers के लिए अगर पूछते हैं तब क्या process होता है, right? Prime का तो direct formula है, but what's the process of calculating it for composite numbers?